Hello once again. Now let's discuss something about pH. हम बहुत देर से बात कर रहे हैं एसिड्स एंड बेसिस की कि एसिड्स होते हैं बेसिस होते हैं और बीच बीच में हमने कहीं कहीं पर पीएच भी पढ़ा. तो एक्चुअली व्हाट इज दिस पीएच, हाउ इट इज हेल्पफुल इन स्टडिंग अबाउट एसिड्स एंड बेसिस. लेट्स सी दैट नाउ. As you can see in this slide, variety of things have been shown over here. और सबके लिए हमने एक चीज़ यूज़ करी है, पीएच स्केल. इफ़ यू सी एट द बॉटम ऑफ दिस स्लाइड, आई हैव शोन यू द रेंज एसिडिक टू न्यूट्रल टू अल्कलाइन. और देखो यहाँ पर कुछ चेंजेस भी दिख रहे हैं कलर्स में. एंड द थिंग्स विच आई हैव mentioned over here, see battery, lemon juice, tomato, milk, blood in our body, है ना, and this soap and drain cleaner, bleach, stomach acid, vinegar, so many things are there. और इनमें से हम सारी चीज़ें अगर हम देखें तो we are using in a daily life, ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट है. Without these things actually we can't imagine our life, isn't it? तो देखो कैसे वेरिएशंस हैं हमारे जो भी लाइफ में हम यूज़ कर रहे हैं चीज़ें. बैटरी देखो इसके पीएच अराउंड 0 है. लेमन जूस अराउंड 2. स्टमक एसिड हमने पहले भी बात करी थी कि HCl इज प्रेजेंट इन आवर स्टमक. सो दिस इज ऑल्सो एसिड एंड दिस इज प्रेजेंट इन आवर एसिड इन आवर स्टमक. तो एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन द पीएच. तो इमेजिन करो कि हमारी लाइफ एसिड्स एंड बेसिस के बिना हमारी लाइफ होती ही नहीं, है ना. हाउ मच वी आर डिपेंडेंट ऑन दीज एसिड्स एंड बेसिस इन आवर डेली लाइफ. व्हाट हैव वी स्टडीड टिल नाउ. हमने इंडिकेटर्स की बात करी थी कि एसिड्स एंड बेसिस कैन बी आइडेंटिफाइड विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर्स. बट इंडिकेटर्स आर ओनली हेल्पिंग अस इन आइडेंटिफाइंग द एसिड एंड बेस, isn't it? हाउ डू वी नो कि इसमें से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है, बहुत ज़्यादा वीक कौन सा है, या हम कौन से एसिड को हम यूज़ कर सकते हैं एज पर इट्स स्ट्रेंथ. तो व्हाट वी नो नाउ कि एज वी आर diluting the acid, that means if we are diluting, if we are adding it water into it, तो concentration of hydrogen ions and hydroxide ions decrease with the increase in dilution. Remember this thing. But now the question arises कि how to calculate the amount of these ions in the solution. हमें कैसे मालूम चलेगा, या अगर हम कहें कि strong है या weak है तो how to identify the strength of acids and bases. तो कोई ना कोई चीज़ तो होगी जिसके बेसिस पर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं strength acids and bases की, isn't it? Okay, now so how it can be done? It can be done by using universal indicators. What is a universal indicator? It is a mixture of the several indicators mixed together, and this universal indicator shows different colors at different concentration of the hydrogen ions in a solution. ब्लू लिटमस, रेड लिटमस, ये सिर्फ क्या बता रहे हैं हमें कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है. लेकिन ये यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या शो करता है कि कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंगली इट मे चेंज इट्स कलर. तो इसका रेंज देखो क्या है, फ्रॉम pH 1 to pH 14. दिस यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर इज यूजफुल फॉर अस. ओके, नाउ अगेन द क्वेश्चन इज कि ये pH हर बार क्या कह रहे हैं pH. व्हाट इज दिस pH? pH is the scale which help us in measuring the hydrogen ion concentration in a solution. The P, small p over here stands for potens, which in Germany means power, और H of course hydrogen. तो इन अ सिंपल मैनर हम क्या कह सकते हैं कि पावर ऑफ हाइड्रोजन इन द सॉल्यूशन. अगर पावर ज़्यादा है हाइड्रोजन की तो वो एसिडिक होगा, हाइड्रोजन की पावर कम है तो वो बेसिक होगा. तो ऑन द पीएच स्केल वी कैन मेजर द पीएच फ्रॉम 0 विच शोज हाईली एसिडिक टू 14 विच शोज हाईली अल्कलाइन सॉल्यूशन. तो व्हाट इज पीएच? पीएच इज सिंपली अ नंबर. हम इसको नंबर में ही ले रहे हैं, मेजर कर रहे हैं फ्रॉम 0 to 14.
तो ये क्या इंडिकेट करेगा कि द एसिडिक और द बेसिक नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। लेकिन ये काम तो लिटमस भी कर रहा था। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, हायर द हाइड्रोनियम आयन कंसेंट्रेशन लोअर विल बी द पीएच वैल्यू। तो देखो ये पीएच स्केल दिया हुआ है, ये द डिफरेंट कलर्स ऑन द पीएच स्केल वेरिंग फ्रॉम रेड टू पर्पल, strongly acidic from 1 to 3. We call these type of solutions which have the pH 1 to 3 as strongly acidic. The pH 4 to 6 shows that the substance is a weak acid. 7 shows the neutral color which is green on the pH paper. 8 to 10 pH weakly alkaline or weakly basic, while 11 to 14 indicate the strongly alkaline or the strong base solution. अब अगेन क्वेश्चन कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड्स आखिर होते क्यों हैं जब सारे ही एसिड्स हैं और हम कह रहे हैं कि एसिड्स आयनाइज इन वाटर। तो जब सभी एसिड्स का आयनाइजेशन हो सकता है तो हाउ कैन दे बी स्ट्रॉन्ग और द वीक। On the basis of pH, we can say कि acids which have the pH less than 4 are strong acids. But what makes them the strong acids? Strong acids are those which completely dissociate in water, completely ionize in water. There is no unionized ion remain over here, HCl. You can see over here. The number of hydrogen and chlorine ions are completely obtained from the one HCl molecule. So each HCl molecule is getting ionized into one hydrogen and one chloride ion. So that means there is a 100% ionization. All those acids which ionize completely in water, they are called the strong acids like HCl, hydrochloric acid, or the sulfuric acid. They all are strong acid. That means they all have the pH less than 4. Similarly now, what are the weak acids? जिनका pH 4 से तो ज़्यादा हो लेकिन 7 से कम हो, ऐसे एसिड्स को हम क्या कहेंगे, वीक एसिड। और ये वीक एसिड्स कौन से होंगे, जिनका आयनाइजेशन कंप्लीटली नहीं हो रहा हो, जैसे एसिटिक एसिड, दिस इज एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड। तो ऑल दीज टाइप ऑफ एसिड्स डू नॉट आयोनाइज completely in water. And one more thing you can understand over here, ये सारे एसिड्स एडिबल एसिड्स हैं विच वी कैन ईट, विच वी इंक्लूड इन आवर डेली फूड। एसिटिक एसिड सिरका वी आर यूजिंग, लैक्टिक एसिड कर्ड। तो दैट मीन्स दे ऑल आर एडिबल एसिड्स। व्हाई दे आर एडिबल एसिड्स? बिकॉज ऑफ कोर्स दे आर द वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड्स are highly corrosive in nature, so we can't use them in our diets, but weak acids, they are generally present in the fruits, in the vegetables. These all are the weak acids since they do not ionize completely in water. So here one more thing I must specify, you can see the reversible arrows over here. That means the complete ionization does not take place. As soon as the concentration of the ions increase, the reaction again start moving in the backward direction. तो ये रिएक्शन कभी कंप्लीट होता ही नहीं है, इसलिए कभी भी 100% आयनाइजेशन इन एसिड्स का नहीं होता. तो ऑल दीज एसिड्स आर कॉल्ड द वीक एसिड्स. सिमिलरली जैसे एसिड्स स्ट्रॉन्ग और वीक होते हैं, वैसे बेसिस भी वीक और स्ट्रॉन्ग होंगे. Of course, the bases which have the pH more than 7 but less than 10 are called the weak bases, while those which have the pH in the range of 11 to 14 are the strong bases. तो इसका मतलब क्या है कि जो pH पेपर पे ज़्यादा पर्पल कलर अगर शो होता है, इट शोज कि बेसेस आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा, विच इज अगेन ionizing or dissociating completely in water. So that means again 100% ionization is there. For example, NaOH, KOH. While the weak bases which
do not ionize completely, which ionize dissociate only partially in water. Again, the organic bases are weak bases. Ammonia is a weak base because it does not ionize completely. So we can generalize one more thing. Organic acids and organic bases are weaker while the synthetic ones are strong. Synthetic HCl and H2SO4, these are synthetic acids, or we call them mineral acids also. Organic acids, which are obtained from the living beings, all these are the weak acids. This table shows the pH of the different solutions. As you can see, the saliva before meal is alkaline in order to prevent the tooth enamel, while after the meal it becomes slightly acidic. Lemon juice, of course, it is acidic in nature. Colorless aerated drink, it is also acidic in nature. Carrot juice, acidic. Coffee is also acidic medium. Tomato juice, of course, acidic medium. Tap water is somewhat neutral, but due to the presence of minerals, it becomes a little bit alkaline or basic. 1 m sodium hydroxide, the strongest base, it has the 14 pH. So the color on the pH paper, it will appear as a dark violet, while 1 m HCl, hydrochloric acid, the strong acid, it shows the dark red color on the pH paper. See how pH is useful in our human body. The pH level varies in our body for the proper digestion of food. You can see over here the complete alimentary canal, how the food, as it passes from the mouth to the large intestine, the pH level varies. Saliva 6.5 to 7.5. Then in the stomach 4.0 to 6.5. Lower stomach, duodenum, small intestine, it is again 4 to 7 pH, and large intestine also 4.27 pH. It becomes a neutral as the food passes throughout the digestive system for the proper digestion. So this diagram also shows you the average time the food is spending in each part of the digestive system along with the pH in the respective organs. Again, let's do some questions. We have already discussed all these things. Just a quick recap for these things. How is the concentration of hydronium ions affected when the solution of an acid is diluted? Hydronium ions get reduced. Remember, how is the concentration of hydroxide ions affected when excess base is dissolved in a solution of a sodium hydroxide? Remember, the base contains hydroxide ions, so it will obviously increase the concentration of hydroxide ions. Why does distilled water not conduct electricity whereas rainwater does? I hope now you have the answer for this. Distilled water do not contain any sort of impurities, any sort of minerals. Distilled water is the purest form of water. So can it conduct electricity? Fourth question. Why do acids not show acidic behavior in the absence of water? Already we have discussed this thing previously. 5 solutions A, B, C, D and E, when tested with universal indicator, showed the pH as 4, 1, 11, 7 and 9. Now you have to identify which solution is neutral, which is strongly alkaline, which one of these A, B, C, D and E is strongly acidic, weakly acidic and weakly alkaline. Arrange these solutions in the order of increasing hydrogen ion concentration. Remember, the hydrogen ion concentration is increasing, so the pH will be decreasing. Remember. Then the last question. Equal lengths of magnesium ribbons are taken in test tubes A and B. Hydrochloric acid is added to test tube A, while acetic acid is added to test tube B. Amount and concentration for both the acid is same, but
you have to observe that in which test tube will the fizzing occur more vigorously and why. Fizzing means the effervescences start coming out, the reaction might take place. So in which one? HCl, remember, is the strong acid and the acetic acid is the weak acid. So you have to think over it and give the answer, justifying it with the help of the chemical equation and your explanation. In the next, we will study how this pH is important in our everyday life. Already you have studied the usefulness of pH in our digestive system, but there are some more applications of pH. So we will discuss in the next slide.